Good morning, class. Today we will be starting with this, new concept or a new topic we will be beginning with. So you are in the LegalStix Law School, and we are doing this course of Samvidhaan, where each day we take up a new topic and we will be trying to cover the entire Constitution of India in a comprehensive manner. And then it is also a certificate course for you. So after successful completion of this course, you will be getting a certification as well from LegalStix Law School. And I hope the classes that are going is helping you with your exams, and you are enjoying the entire course. So we will quickly begin with the today's lecture. So in the last classes, or particularly the last week, we have been talking about the Constitution, and rather we've been talking about the Constitution in an objective manner. कि क्या है Constitution, why do we study it, या फिर what are the elements that make it supreme. So we've done 2-3 things. We've done its supremacy, we've done why do we study it, its background, the history, or what was the need to make it, from where we have borrowed it, or what places or what are the borrowings, why is it known as a patchwork. So different things we've understood. From today's lecture, or maybe this class, is particularly about the opening of the Constitution, or the beginning of the Constitution. Now, when I have to say the beginning of the Constitution or opening, let's begin with an idea. Suppose you are reading a book. Okay, I'm sure every one of you somewhere in your life must have read any book, be it a novel. Let's take it a novel. Now, generally, before a book chapter starts, or when the story generally starts, before that, in every book, you will find, a page whose title is preface. What do you mean by a preface? Researchers or students of LLM particularly, or maybe PhD particularly, or masters particularly, when they write their dissertation, they also write a preface before they start writing their dissertation, or any author would write a preface. So what generally is a preface? What do you mean by a preface? So in layman's term, we can say कि किसी भी बुक का प्रीफेस या किसी भी किताब का प्रीफेस किस चीजों के बारे में बताता है. It is like an introduction. Okay, it's like an introduction to the book कि भाई what all things will be there in the book, why has the author written this, okay, what is in gist in this book, what will you be able to read, या फिर from where did you get this idea, or why has the author chosen this particular topic. तो आप कह सकते हो when we are speaking of similarly preamble. अब preamble जो है वो हम इस तरह से उसको पढ़ सकते हैं, या जनरली अगर आपने अपनी बुक्स में या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी किताब या टेक्स्ट बुक में देखा हो, तो preamble के साथ एक टर्म यूज होता है कि भाई it tells you the philosophy. Okay, philosophy behind the Constitution. कि भाई ये इसके बारे में बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, या कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आइडिया है, इसका क्या बिलीफ है. Now, similar is the preamble, जैसे कि किसी भी एक नॉवल का प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का. So layman terms में तो preamble is just a introduction to the constitution. It is the idea behind कि भाई ये authors ने constituent assembly में जो भी preamble बनाने के या constitution बनाने के जो authors थे, the members of the constituent assembly, why did they make it? Okay, why did they make this constitution? So they made this constitution so that they can set up the country as a democratic republic. They made the constitution so that they can provide to the people with justice, equality, fraternity,
they can, they can save individuals dignity, and they can, bring the country together, and it, contains or holds the country's unity. Okay, the integrity and unity of the nation is, preserved. So this is what a general overview of a layman who has not understood law, in a very better manner, तो वो इस तरह से आपको समझा देगा कि प्रियम्बल क्या है। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं, when we are speaking of legal professionals or somebody who's trying to understand the polity, in a comprehensive manner, in a detailed manner, so whenever we are speaking of the constitution, the topic preamble will come up. So what is preamble? Okay, what is the preamble to, the Indian Constitution? What do you mean by this word? So this class is all about the preamble to Indian Constitution. तो हम कह सकते हैं कि the preamble of the Indian Constitution, if we say कि भाई what is it about? So let's speak of, we are talking about the philosophy. किसकी philosophy? हमारे constitution की philosophy we are speaking of. So when we are speaking of the preamble, we are trying to say, we are understanding कि भाई why our constitution was made, what our constitution is about, and what are the objectives. Okay, similarly to a preface, या फिर किसी भी किताब या नॉवल का preface जो बताता है ऑथर ने इसको क्यों लिखा, वो क्या चाह रहा था इसका आउटपुट, उसको कहाँ से ये आइडिया आया, what was the requirement. So similarly, the preamble of the Indian Constitution also tells you the philosophy behind the Indian Constitution. अब इसको जानने के लिए कि भाई ये क्या philosophy है, तो actually में Constitution की philosophy क्या है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का मतलब है कि भाई ये आपके कंट्री के जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज है जिसके ऊपर द गवर्नेंस इज डन और द कंट्री इज बिल्ट अप और द नेशन इज बिल्ट अप, दोस थिंग्स आर मेंशन्ड. सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स and the values. Okay, and the values. So whenever you are speaking of why, or why it was required, or who has asked for it, or what is the idea, from where did the constitution makers got this idea, तो ये क्या चीजों को reflect क्या कर रहा है, this constitution, the philosophy behind the Indian constitution, एक इसमें statement आप ये भी कह सकते हैं कि this is actually reflecting reflecting the aspirations of Indian people. It is reflecting the aspirations of Indian people, and it provides, governance structure, या फिर कह सकते हो, it provides a framework of governance, or a framework for governance, and it aims for protecting rights, or it aims for protecting individual या collective rights. अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी की बात करते हैं, तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो इसकी फिलॉसफी या इसके प्रिंसिपल्स, मतलब वो प्रिंसिपल्स खुद में क्या है, जो हम समझने की कोशिश करते हैं. कुछ एस्पेक्ट्स हम अगर हम नोट डाउन करना चाहें, तो वी कैन से कि भाई सोशल जस्टिस इसकी एक मेजर प्रिंसिपल है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इज अ मेजर प्रिंसिपल. Then, when you are speaking of democracy is a important feature, democracy. Then, it is necessary कि भाई different तरह के लोग होंगे, तो अलग-अलग religion भी हो सकते हैं, but you have to be, neutral to them. आपको किसी को favor नहीं करना है किसी एक religion को, और किसी को ज़्यादा किसी religion के against भी नहीं जाना है. So you're neither pro, neither you are anti any particular religion. तो सेक्युलरिज्म की भी आइडिया इसके अंदर दिया हुआ है. उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, द फंडामेंटल राइट्स आर देयर, देन द DPSPs आर देयर,
you are concerned, एक major चीज, the idea of rule of law is provided in your constitution, or you are very much concerned to the cause of the worth of every individual. You are very much concerned to every human's dignity and his liberty, कि भाई सबको personal liberty मिले, everybody have safeguards against any kind of arbitrary detention, सबके human rights और freedoms को promote किया जाए. तो जब हम majorly बात करते हैं कि भाई क्या philosophy हुई, what is the philosophy, what is the philosophy of Indian Constitution, what philosophy does it provides, or what is the, you can say, the major principle, what comes up. Okay, what is the major principle कि भाई our constitution ये किस चीज के बारे में reflect करता है. It reflects about the commitment to social justice. ठीक है, it reflects of the commitment to social justice. किस तरह से, by providing equality, by providing democracy, by providing secularism. So it is committed to social justice, it is committed to give equality, democracy. It is about committed to protect individuals or their rights. ठीक है, तो ये मेजरली अल्टीमेटली करना क्या चाहता है, एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है. aims to create a just society. क्या काम रहेगा जिस सोसाइटी का, which will uphold the dignity, which will uphold the dignity and the well-being. Fine, which will uphold the dignity and the well-being of citizens. So ये एक इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं या एक ओवरव्यू कह सकते हैं कि भाई इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, और द प्रीएम्बल वर्क इज टू प्रोवाइड द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन's philosophy is provided in the preamble. तो अब एक्चुअली में हम इसको प्रीफेस से अगर रिलेट करें, किसी भी बुक के प्रीफेस से रिलेट करें, तो अगर किसी चीज की फिलॉसफी हम जानना चाह रहे हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट या किसी बुक की फिलॉसफी हम जानना चाह रहे हैं, तो हम किन चीजों से उन चीजों को पता लगा सकते हैं. मतलब वी आर ट्राइंग टू नो एंड डिग इनटू द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स. वी आर ट्राइंग टू डिग इन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स. उसका पर्पस क्या है बनने का, उस बुक का, उस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है. कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस है उसका पर्पस, जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना है अल्टीमेटली उसका पर्पस. उसकी वैल्यूज क्या है. ओके, व्हाट आर द एथिक्स, the values of Indian Constitution or our country lies in the concept of equality, in the concept of social justice, in the concept of democracy. So these are, you can say, the ideas or overall एक ऐसी insight. Okay, so something which provides you with those principles, values जो उसको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. ओके, those values which are giving direction to that document, those values which are giving meaning to that document, और जो आपको उस किताब को, उस बुक को एक अच्छे डीप रैशनैलिटी से या एक वाइड इंटेंशन के हिसाब से समझाने की और इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा. तो प्रीएम्बल एक ऐसी चीज हुई which gives you insight about the Indian Constitution, on its values, on its principles, on its belief, and it tries to give a holistic meaning and a wide direction to that Constitution, so that it can lead to creation of a just society, so that the commitment towards social justice, equality, democracy is held upright, और ये सबसे ऊपर रहे कि भाई well-being of the citizen और उसके protection and individual rights की जो बात है वो सबसे ज्यादा supreme रहे. तो ये आपको एक deeper rationale provide कराता है. It helps you to understand what was the intention. Okay, it helps you to
make it clear किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में which is there in the Indian Constitution about what was the intention behind creating of that particular provision or that particular topic. तो ये आपको what is the preamble helping you do? It is giving you, or it is similar to a guide. The preamble works as a guide कि भाई कैसे आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करोगे और कैसे आप इसको अप्लाई करोगे, आप कैसे इसकी एप्लीकेशन करोगे. सो द वर्क, the overall philosophy behind the constitution, which is the preamble. So the preamble helps you, or it tells you or guides you about, it guides you about interpretation of constitution, fine, or it helps you in application. It helps you in finding out the real intention, the deep rationale or the deep meaning which is behind its existence. Okay, तो अब ये तो हो गई हमारी मतलब एक जनरल बात कि भाई प्रियम्बल का काम क्या है, and the constitution also starts with the preamble. और preamble में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि भाई we the people of India, it starts with a statement कि लोगों ने एक statement दी, that is how it starts with. So when you are speaking of the Indian Constitution or saying कि भाई ये opens up with a preamble, okay, कि Constitution opens up with preamble. This is what you are saying कि it is opening up with a preamble, और उसमें एक statement है कि भाई how does it start with we the people of India who have resolved for ourselves कि भाई हमने क्या resolution ली है, we have solemnly taken a resolution कि we will make our country sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, और हम क्या secure करेंगे अपने लोगों के लिए? We have decided that we will secure justice, liberty, equality, fraternity, और हम क्या दोबारा assure करेंगे? हम अपने सब लोगों की, हर individual की dignity को भी assure करना चाहते हैं, and we are providing to ourselves कि हम unified रहेंगे, okay, that we are together, we are upholding the brotherhood, और हम ये सब चीजें चाह रहे हैं अपने आप को देना. एंड और जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये सब अपने आप को प्रोवाइड करेंगे तो हमने इस तारीख को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को प्रोवाइड कर दिया. दिस इज व्हाट the preamble or the statements or the things which are mentioned in this document is फर्स्ट पेज पे ये सब लिखा हुआ है. तो अब इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है? लेमैन मीनिंग आपने समझ लिया कि भाई ये फिलॉसफी बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है, तो यही इसका एक एक्चुअल मीनिंग भी है. ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग इज. कोई इसका डिफरेंट मतलब नहीं है. तो ये कह रहा है कि भाई जो प्रियम्बल है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है. द प्रियम्बल इज एन introduction किसको? to the statute. Preamble is just an introduction to the statute. ये एक introductory part है. Okay, it is introductory part of what statute, what document rather. हम इसको statute का नहीं कहेंगे because literal meaning of preamble is any kind of introduction to the statute. But when you are speaking of the constitution statute नहीं है. It is the law of the land from where all laws derive its force. So it is an introductory part of the constitution only. That is what we can say. तो दूसरी चीज और इसके बारे में क्या बोला गया है कि भाई preamble का काम क्या है? preamble जो होता है it is a key. preamble को बोला गया है कि ये एक की है जो कि किस चीज को अनलॉक करेगी? which will unlock the legislative intent. which will unlock the legislative intent. मतलब preamble आपको बताएगा कि ये क्यों बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना था, और it will help you
इन अ नाइस मैनर, एक अच्छा तरीका है प्रियम्बल को पढ़ने से आप ये पता लगा सकते हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो प्रियम्बल का पर्पस क्या है? इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इट इज अ की टू ओपन द इट इज अ की टू ओपन टू द minds of the makers of the constitution, कि भाई it is a key to unlock the legislative intent। तो इसमें बेरोबरी यूनियन वर्सेस री-बेरोबरी यूनियन का जो केस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। तो ये जो आइडिया है, दिस स्टेटमेंट, अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, ठीक है, की टू ओपन टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा स्टेटमेंट इसमें बोला गया है। तो बेरोबरी यूनियन का जो केस है, दिस केस टेल्स अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ऑब्जर्वेशन दी है इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करते हुए बोला कि जो प्रियम्बल है, इट वाज अ की टू ओपन द माइंड्स of the makers, ठीक है, it's a key to open to the mind of the makers। मतलब उनके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था जब ये चीजें बना रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उस चीज को आप थोड़ा बहुत प्रियम्बल को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज बेरोबरी यूनियन ने बोली कि भाई आप इससे दूसरी चीज ये भी समझ सकते हैं कि किन पर्पसेस के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट प्रोविजंस को बनाया। सो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड द जनरल पर्पसेस फॉर which the constituent assembly made the provisions। okay, the constituent assembly made the provisions of the constitution। So these two things you can find out from the preamble। so this is what was held in the case of री-बेरोबरी यूनियन। अब इसका क्या ऑब्जेक्ट है भाई? ऑब्जेक्ट तो अब हमें पता लग गया कि भाई कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचिंग द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी, जो आप उसको पढ़ने से पहले समझना आपके लिए जरूरी है। तो वो उन चीजों के बारे में बता रही है, कुछ फैक्ट्स के बारे में बता रही है, which you need to understand, which you need to know, those values you need to know before you start reading the structure itself। when before you start reading कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस बेसिस के ऊपर खड़ा है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। तो दूसरी चीज which we can say कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रियम्बल को क्यों पढ़ते हो, what is the role, what is the scope, what is the purpose। तो उसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो केशवानंद भारती में द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई प्रियम्बल का जो काम है, इट इज टू गिव यू द आइडियोलॉजी और टू गिव यू द स्पिरिट और आइडियोलॉजी। ये टर्म आप याद कर लीजिएगा प्लीज, स्पिरिट और आइडियोलॉजी बिहाइंड constitution is crystallized। okay, it is crystallized in the preamble। so this is what the terms the words which were used in Keshwanand Bharti। मतलब spirit और ideology is crystallized in the preamble about the constitution का मतलब है कि भाई जो constitution का purpose है, constitution के objective है, उसका जो पर्पस है, उसकी क्या पॉलिसी है जिसके ऊपर वो बना है, उसकी अंडरलाइंग पॉलिसी, वो सब चीजें जो है वो प्रियम्बल से आपको पता चल सकती है कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑन व्हिच
the constitution is set up, what are the great purposes on which which are embodied in the constitution, what is the policy underlying the provisions of the constitution, वो सब चीजें आपको preamble से पता चल सकती हैं. So this is what the court meant when they were using the terms. The preamble helps you in understanding the spirit or ideology in the constitution. So rightly the court said कि the spirit or the ideology behind the constitution is sufficiently, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से in the preamble it is mentioned. So दूसरी चीज इन्होंने ये भी ऑब्जर्व करी कि भाई preamble के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी डला हुआ है, कंटेन्ड है. तो प्रियम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल में तो जो चीजें दे रखी हैं भाई, प्रियम्बल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में दे रखा है, ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में दे रखा है कि इंडिया शैल बी अ democratic republic, India shall be a sovereign nation, it is about secularism, it is about achieving about justice, equality, liberty, fraternity. तो ये सब चीजें जो preamble में दी हुई है, these all things mean the basic structure of the constitution. तो ये आपके main objectives को तो बता ही रहा है, ठीक है, it is setting out the main objectives. और वो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके, वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर भी है कॉन्स्टिट्यूशन के. सो बाय सेइंग दिस द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि भाई द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, दे आर कंटेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके, व्हिच द लेजिस्लेचर इज वांटिंग टू अचीव, the legislature is also wanting to achieve, मतलब the different laws जो कि पार्लियामेंट से पास होंगे, उन laws के थ्रू ये सब ऑब्जेक्टिव्स जो कि प्रियम्बल में लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो सब अचीव करने की बात की जा रही है. और वो सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है. तीसरी चीज, प्रियम्बल क्यों नेसेसरी हो जाता है, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया उसका सोर्स आपको बताता है. From where has the constitution come, or what is the source, from where has this come into existence? So the preamble starts with the word we the people. हम ही ये सब कह रहे हैं ना, हम ही इस कंट्री को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम ही चाह रहे हैं किस तरह का मतलब हमारे लोगों के लिए हम क्या क्या अचीव करेंगे, क्या क्या सिक्योर होना चाहिए इधर फॉर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. हमने क्या रेजोल्यूशन ली है, हम किस दिन इस चीज को अपने लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे, कब हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हमने किस दिन इसको बनाकर अब रख दिया है कि यस नाउ दिस विल बी एप्लीकेबल. सो वी आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द स्कोप. तो स्कोप से आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स से आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सोर्स है. सो द प्रियम्बल ऑल्सो टेल्स कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. और बिना किसी एम्बिग्विटी के सीधा सीधा एक डेट बता दी गई है प्रियम्बल के अंदर कि किस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, किस दिन इट वाज गिवन टू दीज पीपल हु आर द सोर्स, और किन्होंने ये कैसे प्रोवाइड किया, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर असेंबल्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो मतलब जो कि आपका इंडियन पीपल हुए, ओके, सो द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी जहां से कॉन्स्टिट्यूशन आता है. और उसके अलावा ये एक इनैक्टिंग क्लॉज भी दे देता है, इनैक्टिंग क्लॉज भी दे देता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इट इज ब्रिंगिंग इट इन एग्जिस्टेंस कि भाई ये कब अडॉप्ट होगा. तो ये चीज कि भाई preamble also provides a enacting clause
which brings into force the constitution, enacting clause, वो date, that thing कि brings a enacting clause, enacting clause जो कि constitution की adoption के बारे में बता रहा है, this is provided in the preamble and it is necessary to understand it from this perspective. अभी enacting clause वाली जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में बोली थी, गोलकनाथ केस or the Golaknath versus State of Punjab case. Okay, Golaknath versus State of Punjab, 1967 का ये केस था. So this idea कि the preamble also contains the enacting clause which brings into force the Indian Constitution, या date of commencement जो है या date of adoption जो है, that is been given. However, जो enforcement है, real enforcement is provided under article, your article 394 May it is provided, 26 January. But give to ourselves, adopt and enact and give to ourselves, that date is provided under the preamble itself. अब क्या ये यूजफुल भी है? हाउ, अब आपने ये तो बोल दिया अभी कई कि प्रियम्बल से आपको सारे प्रिंसिपल्स का पता चल सकता है, यू कैन नो द इंटेंशन बिहाइंड पीपल हु हैव मेड इट, कि भाई क्यों बनाया उन्होंने. तो इसमें व्हेन वी आर ट्राइंग टू सी कि वेदर द प्रियम्बल इज useful in making in getting to know the interpretation of the constitution, so by how useful it is. So sequence wise there are 3 cases that deal with कि भाई utility क्या है उसकी, what is the utility of preamble in interpreting. So utility of the preamble in interpreting the Indian Constitution can be seen from the perspective of 3 cases जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग बात बोली है. सबसे पहले आता है A.K. गोपालन का केस, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. अब इन A.K. गोपालन, इसके अंदर इस केस का दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई ये केस जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ को समझने के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप में इसने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया था. तो इसके अंदर क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि जो प्रियम्बल है उसको एक गाइडिंग स्टार की तरह यूज करना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, या फिर कोई भी लॉ जो कि आर्टिकल 21 के अंडर बना है. Okay, so the contention which was given by A.K. Gopalan case was कि you use the preamble in understanding the meaning of democratic constitution in giving a wide interpretation to article 21. ठीक है, और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट कर रहे हो या किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट टू लाइफ को वॉयलेट कर रहे हो, तो अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट कर रहे हो तो वो चीज जो है वो एक अच्छा लॉ नहीं हो. द सुप्रीम कोर्ट सेड कि भाई हम प्रियम्बल को इतना वास्ट तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. Okay, so in A.K. Gopalan case, I am trying to say the Supreme Court rejected the idea कि जो preamble है, it should not be a guiding star in interpreting any law or in interpreting, the Constitution itself. The Supreme Court said कि A.K. Gopalan में preamble is not a guiding star. Not a guiding star, मतलब ये कोई help नहीं करता, is not guiding star in interpreting law or interpreting constitution. This was held. ठीक है, तो अब ये चीज मतलब it was not really a good decision which was said by the Supreme Court, or या फिर
मतलब जो भी ये डिसीजन इसके अंदर आया AK गोपालन के केस में, और मेजॉरिटी ने बोल दिया कि भाई जब आप किसी भी लॉ की बात कर रहे हो, मतलब दिस केस वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 21 डिटेंशन लॉ के ऊपर ये केस था, और उसकी वैलिडिटी का क्वेश्चन था कि क्या वो लॉ सही लॉ है, whether it is a valid law or not, because it did not give you any provision about trial, it did not give you any provision about hearing the other party before holding that person guilty. तो मतलब उसमें principles of natural justice नहीं provided थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन में बोला कि भाई जब आप ये जो टर्म है लॉ, ठीक है, आर्टिकल 21 के रेफरेंस में जब आप किसी भी लॉ की बात करते हो तो आप सिर्फ एक स्टेट मेड लॉ की बात कर रहे हो। मतलब अगर वो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, आप उस लॉ की बात कर रहे हो, आप नेचुरल जस्टिस की बात नहीं कर रहे हो। तो कोर्ट बोलती है कि भाई विद रेफरेंस टू आर्टिकल 21 आप मीनिंग जो है या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्रियम्बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस वाज नॉट अ गुड डिसीजन व्हिच आई वुड रादर से। दूसरा डिसीजन जो आता है वो आता है 1960 में। ओके, the second case which becomes important here is Beruberi Union case। अब इसके अंदर बोला कि भाई प्रियम्बल से हमें कुछ ऐसा तो पता नहीं चल रहा जिससे गवर्नमेंट को या उसके डिपार्टमेंट्स को दी गई पावर का पता चलता। ओके, द कोर्ट सेड कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल we can never regard it as a source of any power, okay, which is conferred on the government or any of its department। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये सिर्फ तब इस्तेमाल आप कर सकते हो, प्रियम्बल को आप सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हो जब उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कोई एम्बिग्विटी हो, ठीक है, या उसके दो मतलब निकल के आ रहे हो। लेकिन अगर सब चीजें क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो आप प्रियम्बल को इस्तेमाल नहीं करोगे। सो द कोर्ट सेड कि प्रियम्बल को आप नहीं यूज करोगे अगर इनैक्टमेंट की जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज of the enactment which is given in the constitution is clear। Okay, that preamble would not be resorted to if the language of the enactment is clear। कि preamble not be used if the language in the constitution or understanding of the enactment is clear। ठीक है, और आप इसको सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हो when there is a ambiguity or there may be more than one meaning। So there are two or more meanings coming out from its reading। तो ये जो चीज थी बेरूबेरी यूनियन में और इन दी AK गोपालन केस, तो उन्होंने बोला ये एक इंट्रोडक्शन हो सकती है, मान लिया इट इज अ इंट्रोडक्शन, इट माइट बी एन इंट्रोडक्शन, बट ये जो है दिस इज नॉट it is not useful in interpreting the constitution। it can be said as an introduction, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें बता रहा है, बट इसको आप इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए आप इसको नहीं यूज करोगे। थर्ड केस इज इन अंडरस्टैंडिंग द यूटिलिटीज, द लैंडमार्क केस आल्सो इज द केशवानंद भारती केस। ओके, द केशवानंद भारती जजमेंट। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करी। ठीक है, द कोर्ट सेड कि भाई
जो प्रियम्बल में दिया है वो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देता है इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ दोज नोबल विजन, या फिर जो वैल्यूज प्रियम्बल में लिखी गई है उसी के बेसिस पे, उसी तरीके से, उसी कंसिडरेशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए. So the Supreme Court has, given a lot of importance to preamble in the Keshwanand Bharti case. It has said it is a part of the constitution. It is a part of the constitution. और री-बेरेबरी यूनियन में लिखा not part. It is not part of the constitution. और इसमें लिखा yes, it is a part of the constitution, and it will give you valuable guidance in matters of interpretation of the constitution. And आपको rather you should read the constitution in light of the vision or the principles which are provided in the preamble. So it is a part of the constitution, and yes, it of course is useful in understanding the principles. Okay, useful in principle understanding, or it is useful to know the interpretation of the Indian Constitution. अब दूसरी चीज आती है कि भाई let's come to the contents. Okay, अब we will also try to see कि भाई इसमें हर word जो लिखा गया है, whatever word which is mentioned in the preamble, तो क्या क्या चीजें हमारे लिए important है. I'll just mention the few words which we will be dealing in detail, या फिर सारे ही rather. We the people of India. Okay, so we have come up to, we've come up to the contents. तो सबसे पहला है we the people of India. Okay, then sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity, unity, integrity. और लास्ट वाला है आपका, sorry, yes, and the last thing is the enactment clause. Okay, so in case any question, which might be a long question कि भाई preamble क्या है, ऐसे पूरा एक बड़ा question भी आ सकता है. Question ये भी आ सकता है कि whether preamble is a part of the constitution or not, whether what is the usefulness of the preamble, what is its utility, or maybe general words may be picked up, particular words may be picked up from the preamble to explain their meaning, or maybe to explain why they exist there. So the question may come up in both ways. There may be MCQs in it, there may be a long answer for this. So इसीलिए we need to understand in detail, word by word, what is the meaning of these terms. तो contents समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए. तो we'll begin with the word the people, या फिर the source of political power. Okay, so we the people. Okay, so we the people का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको मतलब कैसे मिला. तो पीपल ने, the people of India, so the people of India have adopted this for themselves. The people of India has adopted, they have enacted, मतलब enacted through a constituent assembly. खुद से सारे लोग नहीं बैठे थे, और it is given to them by these people only, given to themselves.
It is adopted, enacted through representatives of these people in the Constituent Assembly, and they've given to themselves, this particular constitution. तो इसका मतलब है कि भाई ultimate sovereignty in India resides in people. Okay, constitution is supreme, constitution is legal sovereign, but the ultimate, मतलब source जहां से ये constitution भी आया, the ultimate sovereignty in India resides in the people. तो इस चीज के ऊपर हम कह सकते हैं कि our constitution is, it is fully a representative of the entire nation. क्यों? क्योंकि इसको कोई वोट के थ्रू या रैटिफिकेशन के थ्रू नहीं निकाला गया. Okay, so we can say, the constitution जो है वो एक तरीके से किसी भी वोटिंग के थ्रू नहीं है, वो deliberations के थ्रू है, and it is, a representation of what the people really wanted. So when you are speaking of this idea, we the people of India, why are this term important? तो इसमें केस हम पढ़ते हैं, Union of India versus Madan Gopal. Union of India versus Madan Gopal is a case from 1954, which says, versus Madan Gopal, which says कि भाई जो भी आपकी अथॉरिटी है, okay, the constitution's authority or the constitution is made on the authority of the people, जिनके अंदर ultimate sovereignty lie करती है. So this is what was held in the case of Union of India versus Madan Gopal, that constitution is founded on the authority of people. Founded on authority of people. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है कि जो ये जो आपको प्रियम्बल से दिखाई भी दे रहा है कि भाई जो आपका the time when you are recognizing this particular power, okay, so the court has said कि भाई जो preamble में लिखा हुआ है कि the power of Indian legislature to make laws, और ये चीज कहाँ है? From the creation of the constitution itself, कि भाई constitution के preamble से ये चीज पता चलती है कि भाई उसको अपनी जो authority है from Indian people मिलती है. ओके, और केशवानंद भारती के केस में ये चीज दोबारा से बोली गई कि भाई ऑल्दो ये जो कि आपका ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं थी, दिस इज रॉन्ग. ओके, इन केशवानंद भारती इट वाज सेड कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं थी, बट कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, and the court said that it was a representative assembly. Directly चाहे लोगों ने उनको ना चूज किया हो, okay, तो उन्होंने बोला कि from the preamble in केशवानंद भारती it also becomes important from the aspect कि भाई it is from the preamble that you get कि भाई it is the people of India जिन्होंने ये constitution को अपने ऊपर apply किया है, who have conferred this constitution on themselves. तो अगर preamble में ये statement है, we the people of India, this means that the people of India have given this constitution to themselves, and it cannot be challenged in the court. Okay, it is a fact and it cannot go into the court कि भाई ये constitution को अपनी power कहाँ से मिलती है. This fact which is mentioned in the constitution, you have to accept it. It was held in the Keshwanand Bharati case कि भाई from the preamble you get to know कि भाई constitution को
उधर के लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई किया है, अपने आप को प्रोवाइड किया है कि भाई पीपल ऑफ द कंट्री हैव कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन देमसेल्व्स। ये चीज आप कोर्ट में दोबारा से चैलेंज नहीं कर सकते और ये फैक्ट अपने आप में करेक्ट है और कोई भी कोर्ट इसके अंदर दोबारा से डिटेल्स में नहीं जाएगी। This was what was mentioned in Keshwanand Bharti's case. Okay, and the contention कि भाई Constituent Assembly, Representative Assembly नहीं थी, but this was rejected. So the Keshwanand Bharti case have also said कि the people through the Constituent Assembly have made this constitution for themselves. So ultimate power is in the people only. Now, next is ये 5 term particularly sovereign socialist republic, sovereign socialist democratic republic. Okay, so you can also remember is like ये इसको हम SQDR बोलते हैं, ऐसे आप ये याद कर सकते हो। तो what do you mean by sovereign? sovereign का मतलब है which is uncontrolled, uncontrolled, absolute. Okay, a power which is uncontrolled, it is absolute and it is within its own spheres. Okay, अब state कब sovereign होता है? When do you mean the state is a sovereign? तो मतलब a sovereign state means जब the power resides within itself. Okay, a state is sovereign when in it resides the supreme and absolute power which has no superiors. No superiors. It is free to decide its own way. Okay, तो अब ये जो चीज है कि भाई इंडिया अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, India is no more dependent, on any outside power. ये चीज इसका मतलब है sovereign. India is, no more dependent on any outside power. Internally भी dependent नहीं है, externally भी dependent नहीं है. तो we are speaking of sovereignty in terms of internal and external. तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, it was a dominion. It was internally sovereign but not externally sovereign. But after the constitution came into existence, India has become both internally and externally sovereign. मतलब it does not recognize any foreign master, not recognize any foreign master. Okay, तो ये मतलब है कि भाई इंडिया सॉवरेन है, ठीक है। तो और ऑल्दो वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है, it is a part of the Commonwealth of Nations, it is a part of United Nations also, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका खुद का ऑटोनॉमी, उसका खुद का सुपीरियरिटी विल डिमिनिश, ठीक है। और ये मेरली एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, and in case if India wants to do it, it may do it, in future. It is open to, cut its association at its will, और इसका कोई constitutional significance नहीं होगा। Next comes is socialist. Socialist का मतलब क्या होता है? Socialist का मतलब क्या है? Literally speaking, तो socialist का मतलब होता है कि state has the, ownership of production, distribution, exchanges, ठीक है, कि state के पास सारी means of production, सारी property, ये सब चीजें रहेंगी। ये जो बात है, ये जो टर्म है, ये फर्स्ट डे से कॉन्स्टिट्यूशन में था भी नहीं, ओके। सोशलिस्ट, बट अब तो प्रियम्बल में है, तो सबसे पहले तो इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में फिट इन किया गया, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन इससे ये भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की यूटिलिटी, प्रियम्बल की यूटिलिटी क्या है? प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? Yes, if it is a part, it can also be amended. See, they've added a term socialist.
they've added a term secular, they've added a term integrity. ठीक है? तो this term was added in 1976 by 42nd Constitutional Amendment. इसका literal मतलब होता है कि भाई means of political a system where means of production जो है वो सारा कुछ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज स्टेट के पास है, स्टेट ओनरशिप. ओके, लिटरल meaning is state ownership of means of production, distribution and exchanges. But इंडिया में हम इसको इस तरह से नहीं रीड करेंगे. ठीक है, इंडिया में हम इसको इस तरह से नहीं रीड करेंगे. तो इंडिया में हम इसको कैसे रीड करेंगे? अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमिटी के एक चेयरमैन रहे हैं श्री स्वर्ण सिंह. तो मिस्टर स्वर्ण सिंह ने ये बोला है कि भाई सोशलिज्म को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सोशलिज्म को आप एक्सप्लेन करोगे इन रेफरेंस टू मिक्स्ड इकोनॉमी. It is a mixture of both capitalism and it is a mixture of both socialism. सारा कुछ स्टेट ओनरशिप में नहीं होगा. ठीक है, तो सोशलिज्म का मतलब है कि भाई स्टेट का गोल क्या होगा. You will try to understand socialism in context of India as mentioned in its preamble कि भाई the goal of state is mixed economy. का मतलब क्या है? इस तरीके से the goal of state is to give better life to people, better life to its people, या फिर आप इसको कह सकते हो it is about equality of opportunity also. ठीक है, it is about giving better life to people and it is about giving equality of opportunity also. और जो सोशलिज्म का मतलब है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली इंटरप्रेट किया जा सकता है, डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंटली इंटरप्रेट किया जा सकता है. नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया द मीनिंग और द पर्पस ऑफ सोशलिज्म इज टू गिव अ डिसेंट, okay, it is to give a decent standard of life, a decent standard of life, or to, you know, to secure your citizens from cradle to grave, or decent of life to people and to provide security to your citizens from cradle to grave. Security, cradle to grave. ये जो वर्ड है cradle to grave, security from cradle to grave, this was used by the Supreme Court to understand the meaning of socialism or to understand the concept of equality, किस तरह का वर्किंग और द रोल ऑफ स्टेट शैल बी देयर. तो ये डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी ये चीज बताई गई है. तो इन सब चीजों को समझते हुए हम ये बात एक चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म व्हिच एम्स टू प्रोवाइड अ बेटर लाइफ टू इट्स इंडिविजुअल्स. Okay, so India's concept of socialism is based on the idea कि आप ऐसी policies बनाओ इस तरह से ownership provided हो production की, distribution की, कि everybody gets a better life for them, everybody has equality of opportunity, they have a decent and a good standard of life. One case which becomes important from this perspective is rather two. तो हम इसमें डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ले लेंगे और हम इसमें केस लेंगे एक्सेल वेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड the meaning of socialism as mentioned in the preamble. So I'll just make you write two cases. Elsevier versus Union of India. It is from 1979. तो हम अभी पढ़ रहे हैं सोशलिज्म. ठीक है, Elsevier versus Union of India 1979. तो Elsevier versus Union of India के अंदर the Supreme Court has said कि भाई सोशलिज्म
वर्ड डालने से, adding socialism to the preamble, is leading courts to understand कि भाई, our structure, our political structure is such कि you cannot just push behind people कि भाई उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, ये हमको नेशनलिज्म के फेवर में जाने की ज्यादा मदद कर रहा है, ठीक है। तो द कोर्ट हैज सेड कि भाई द word which is being added, the word socialist which is being added, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब कुछ स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री ही होगी. इट डज नॉट मीन दैट, बट इट मीन्स मोर देन दैट. ओके, इट मीन्स कि द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस, आप उसको इस तरह से नहीं रख सकते कि भाई प्राइवेट ओनरशिप जो है वो एक तरीके से हट ही जाए. Okay, so when in India you are providing for socialism, you are providing for state ownership of industries, but in a limited extent. Okay, so the court has said that the principle of socialism and social justice, कि लोगों को decent standard of life देते देते आप पब्लिक को या प्राइवेट ओनर्स को आप बिल्कुल भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते. सो द कोर्ट हैज सेड दैट प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज को भी रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आप कह सकते हो एक्सेल वेयर इन यूनियन ऑफ इंडिया में सोशलिज्म एज अ आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी is accepted, okay, by the Supreme Court. Another case is DS Nakara versus Union of India. DS Nakara versus Union of India में आप ये बात कह सकते हो कि बोला गया है कि जो सोशलिज्म का पर्पस है, ओके, कि the basic framework of socialism, the basic purpose of socialism in India is to give a decent, it is to give a decent standard of life. It is to give a decent standard of life to working people, and it will provide them security from cradle to grave. तो principle of a socialist state, DS नकारा में ये बोला है कि socialist state का क्या काम होता है. What is the work of a socialist state? The work of a socialist state is to eliminate inequality. Eliminate inequality मतलब कैसे आप inequality को eliminate करोगे? You will reduce, inequalities of income and status. So you will eliminate inequality in income. इनकम की इनइक्वालिटी को हटाने की कोशिश करोगे, स्टेटस की इनइक्वालिटी को हटाने की कोशिश करोगे, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज करोगे, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जो इनइक्वालिटीज है उनको आप हटाने की कोशिश करोगे. सो नेक्स्ट वी मूव टू द वर्ड सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब भी यही है कि दिस वाज आल्सो एडेड अप बाय द 42nd अमेंडमेंट ओनली, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट से पहले सेक्युलरिज्म था ही नहीं कंट्री. वी हैड आर्टिकल 25. We had Article 25 which provides for right to practice religion of our choice. तो सेक्युलरिज्म का मतलब लिटरल मीनिंग क्या है, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही आया था 1976 में, कि जो स्टेट है that does not recognize any religion as a state religion. State does not recognize a religion as a state religion. तो मतलब सारे religions को equally आप treat करोगे, equally treating or equal treating of all religions.
और इक्वल रिस्पेक्ट से आप उन्हें ट्रीट करोगे। आप किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल वो आपकी पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ओके, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी को अगर वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आप जनरली किसी भी इंडिविजुअल रिलीजन, फेथ, वर्शिप के अंदर आप नहीं जाओगे। ओके, इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंडिया रिलीजियस स्टेट भी नहीं है, इंडिया एथीस्ट भी नहीं है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि इंडिया एंटी रिलीजियस स्टेट भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजन के मैटर्स में स्टेट न्यूट्रल है। ना तो ये प्रॉमिस करता है कि भाई कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करो या प्रैक्टिस करो, ओके, ना तो ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या प्रैक्टिस करने को बोलता है, ना ही ये किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ इंटरफेयर करता है। कि इट इज नॉट, मतलब आइडिया क्या हुआ कि जो स्टेट है इज नॉट कंसर्न्ड कि भाई आपकी रिलेशनशिप भगवान के साथ कैसी होगी। द स्टेट इज नॉट कंसर्न्ड विद द relationship of men with their god. It is only concerned with the relationship of men with other people. तो मतलब it provides equal freedom to all religions. Okay, equal freedom to all religions, and state is neutral. State is neutral in in aspects of religion. तो what do you mean when you say कि भाई ये किसी के साथ भी इंटरफेयर नहीं करेगा? तो सेक्युलरिज्म को सेंट जेवियर्स कॉलेज में ये चीज की ये एंटी गॉड नहीं है, प्रो गॉड नहीं है, एक केस है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। ओके, सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस है फ्रॉम 1974. So I'll just clear my canvas and we write down these things. Okay. Saint Xavier's College versus state of Gujarat. सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नीदर वी आर एंटी गॉड द स्टेट। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड कि सेक्युलरिज्म का मतलब इन इंडिया मीन्स डज नॉट मीन एंटी गॉड नॉट एंटी गॉड, नॉट प्रो गॉड। ठीक है, ट्रीट्स अलाइक रिलीजन्स। तो जो कि एक डिवोटी है, जो एथीस्ट है, वो सबको एक जैसा ट्रीट करता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? द स्टेटमेंट व्हिच वाज मेंशन्ड इन सेंट जेवियर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इज कि द स्टेट एम्स टू एलिमिनेट, it aims to eliminate God from the matters of the state, from the matters of state, or nobody shall be discriminated on the basis of उनका religion क्या है। Eliminate God from the matters of state and no discrimination. No discrimination इस ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और इसका आइडिया क्या हुआ कि हर पर्सन अपना खुद का रिलेशन जो है भगवान के साथ कैसा होगा, किस मैनर में होगा, वो उसको आराम से रेगुलेट कर सकता है, उसको मोल्ड कर सकता है, और वो डिसाइड कर सकता है कि भाई उसको कौन से भगवान को वर्शिप करना है। It will be dictated by his own conscience. Okay, and the state has no role in it. ठीक है, so
मतलब क्या हुआ इस चीज का, सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स कि भाई इन मैटर्स ऑफ रिलीजन द स्टेट इज न्यूट्रल, इट विल नीदर प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इट विल नीदर प्रोपगेट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और जो स्टेट है विल not interfere in any religion or in religious practices, और उसका खुद का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। इस सेम चीज को आप कह सकते हो कि ये इतना एसेंशियल है कि इट इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको बदल नहीं सकते, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। इस चीज को, दैट सेक्युलरिज्म इज one of the basic structures of the Indian constitution, was held by the Supreme Court in S.R. Bomai's case, S.R. Bomai versus Union of India 1995 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड यू कैन नॉट अमेंड दिस थिंग। कल मन करे किसी का कि भाई आज से इंडिया एक हिंदू नेशन है, आज से इंडिया एक मुस्लिम नेशन है या कैथोलिक नेशन है, दिस कैन नॉट हैपन, इट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू डू सो, ओके, इट इज बियॉन्ड देयर अमेंडिंग पावर। तो इट इज वन फैसेट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इट इज वन फैसेट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आप कह सकते हैं कि मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब है अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो इक्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। It is one, you can say, pillar of equality, it is one face of equality। तो ये चीज कि secularism is a facet to right to equality, it is one face of equality। This was held in the case of Ismail Faruqi, Ismail Faruqi versus Union of India, Ismail Faruqi versus Union of India in 1995। 1995 में इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला कि सेक्युलरिज्म जो है वो राइट टू इक्वालिटी, वो इक्वालिटी का भी एक हिस्सा है या फिर उसी से इक्वालिटी भी अप्लाई होने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स कि भाई और क्या क्या है इंडिया में जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं या और किन चीजों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट कम्स डेमोक्रेसी, ओके, और या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आप कह लीजिए। वी मोर नाउ डील विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन ने ये बहुत अच्छी इसकी डेफिनेशन दी है कि भाई जो अथॉरिटी है इट इज विद पीपल, ओके, व्हिच मींस द पीपल हैव अथॉरिटी। डेमोस और क्राटोस से ये वर्ड निकला है, डेमोक्रेसी जो है डेमोस और क्राटोस से निकला है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्राटोस का मतलब होता है अथॉरिटी। तो इट मींस अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल और अ गवर्नमेंट बाय द पीपल और गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ फॉर द पीपल बाय द पीपल? मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो किस तरह की जो गवर्नमेंट हो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी, ठीक है, उसके अंदर, उसको बनाने के अंदर जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका कुछ डायरेक्ट शेयर होगा। Okay, so the adult population here is choosing who will be their representatives. Okay, it can be directly, it can be indirectly, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, okay, principle of democracy in a society is always governed by rule of law, ठीक है, not with respect to will of the majority,
और इसका पर्पस क्या है, किसी एक की बात को प्रिवेंट करना, या फिर आप कह सकते हो टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब है जिसमें सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, इट इज ऑपोजिट टू डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। तो ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्रीस में होती थी, एंशिएंट ग्रीस में, मतलब सारी सोसाइटी, सारी कंट्री के लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करके कोई लॉ या कोई बात या कोई रूल को अप्रूव या डिसअप्रूव करते थे। अब इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए ये चीज नहीं हो सकती, तो हमको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रखनी पड़ रही है। सब जगह से, हर ज्योग्राफिकल टेरिटरी से कुछ कुछ लोग विल गो टू पार्लियामेंट, हु विल बी इलेक्टेड बाय the people of India only, and then they will decide what is to be done for this country. Okay, so the concept is कि अब हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी जो है, it is a political philosophy, okay, which is practiced by nations to, you know, govern themselves through representatives which they have chosen directly or indirectly. ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन जो है वो ऐसे समझी जा सकती है। ओके, नाउ we can have one case law here. The case is Union of India versus Association of Democratic Reforms. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 का जो ये केस है, दिस प्रोवाइड्स कि भाई why are people important in a democracy? Okay, so Union of India versus Association of Democratic Reforms is a case about the need of people in the democracy. तो the court has said कि कोई भी democracy तब सक्सेसफुल होगी जब सिटीजन्स अवेयर होंगे. So it has stated a successful democracy poists an aware citizenry. Okay, so democracy will not be able to survive without free and fair elections. Democracy will not be able to survive without aware citizens. Okay, so the case Union of India versus Association of Democratic Reforms provides कि भाई democracy cannot survive without aware citizens, and democracy cannot survive without free and fair elections. तो aware citizens वाली जो बात है, it is said in ये Association of Democratic Reforms, और free and fair elections वाली जो बात है, free and fair elections वाली जो बात है, is said in नरेन शुक्ला versus Union of India. Okay, नरेन शुक्ला versus Union of India 2006, और ये वाली जो चीज है आपकी, it was held in 2002. Okay, so you need aware citizens also, you need free and fair elections also to make a particular democratic country to survive, और voters भी informed हो और elections भी free and fair. Now, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा, he will be an elected one. तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, या when India got independence on 15th of August 1947, India was a dominion. India was not a republic. ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑपोजिट टू या डिस्टिंक्शन टू मोनार्की यूज किया गया है. ठीक है, अब इसका मतलब है कि एक ऐसा स्टेट जहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, उसका जो हेड होगा, हेड विल बी एन इलेक्टेड हेड. हेड ऑफ स्टेट will be a elected person and not hereditary monarch. जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम था, या जब इंडिया डोमिनियन था. ओके, सो
the concept of republic means कि the form of government which is provided in the state and उसका जो head of the state होगा in that form shall be a elected person, will be an elected person. वो indirectly भी elect किया जा सकता है, directly भी elect किया जा सकता है, ठीक है. और जो इसके अंदर जो political sovereignty होगी, it will be vested in people and the head of the state will be elected by people for a fixed term. वो भी मतलब ऐसा नहीं कि people elected him और जब तक मरे नहीं तब तक वही head of the state. That will not happen. Head of the state is elected person for fixed term. Political sovereignty. I am not using the term legal sovereignty. Political sovereignty with people. Legal sovereignty lies with the constitution itself. ये चीज differentiation जो है, it was held in the Keshwanand Bharti case only. ठीक है. And जो supreme power है, it will rest in the people and their elected representatives या their elected officers. तो Indian constitution जो है, it sets up India as a republican form of government. Okay, republican form of government का मतलब है कि the ultimate power resides in the body of people, okay, who are enfranchised, मतलब elected, universal adult franchising, ठीक है, universal adult suffrage. तो ultimate power resides in the body of people enfranchised by universal adult suffrage. लोगों ने जो adult population ने जो elect करे हैं, select करे हैं. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होगा इंडिया में. वो जो है वो इनडायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किया गया है और उसका 5 साल का टेन्योर है. सो इट फिट्स इन ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिपब्लिक. तो व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक, तो हमारा मतलब क्या हुआ कि भाई you have a elected head of a state for a fixed term who in India is elected through the people, and the ultimate power lies in the people or the body of people who are enfranchised or who are elected by the adult population of our country. That is what we mean by republic when we speak of it in terms of Indian constitution or Indian method. Now we come to understand ये जो 3 terms हैं आपके, कि भाई the preamble or the constitution, what is the constitution securing? It is securing justice, liberty, it is securing equality. ठीक है, किस तरह का justice? Social justice, economic, political. किस तरह की liberty? Thought, expression, belief, faith, virtue. कैसी इक्वालिटी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की. ठीक है ना. जस्टिस का मतलब है, when we are speaking of justice, we are speaking of being fair. Okay, we are speaking of to bring out well-being of the community. जनरल जस्टिस का मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी कंडक्ट जस्ट कब कहा जा सकता है? इफ इट प्रमोट्स वेलबीइंग ऑफ द कम्युनिटी, इफ इट इज बीइंग फेयर इन कम्युनिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेलबीइंग. ओके, तो अटेनमेंट ऑफ कॉमन गुड जो है वो हमारा एसेंस है. Okay, so we are not supposedly trying to bring out just wellness or well-being of one person or one individual, but attainment of common good. That is the essence of the justice word which is provided in the constitution. अब ये economic, political और social justice provide करने का मतलब बता रहा है. Social justice का मतलब क्या होता है कि भाई all sorts of inequalities जो कि wealth से, जो कि आपके कास्ट सिस्टम से, रेस से, रिलीजन से, उन सब से जो निकल के आ रही है उसको अबॉलिश करने की कोशिश करेगा. सोशल जस्टिस मतलब अबॉलिशन ऑफ inequalities
बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन इनकम या वेल्थ, ठीक है। तो वो जो उसके अंदर आपकी इनइक्वालिटीज आ गई हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, स्टेटस के बेसिस पे, टाइटल के बेसिस पे, उन सबको आप हटाने की कोशिश करो। यू विल ट्राई टू अबॉलिश दोज इनइक्वालिटीज। और इसको अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जस्टिस कब आप कह सकते हो ये तीनों तरह की इनइक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज कब खत्म हो जाएंगी? जब जो भी डीपीएसपीज, ओके, जो भी डीपीएसपीज है पार्ट 4 में जो वो दिए गए हैं, अगर वो सारे फुलफिल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस है, इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो सब चीजें तब खत्म हो जाएगी जब आपको ये जो भी आइडियल्स ऑफ द स्टेट है जो कि पार्ट 4 में मेंशन्ड है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो सोशल जस्टिस जो है वो इक्वालिटी के भी को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो सोशल जस्टिस को ब्रिंग आउट करने के लिए, उसको लेकर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। नाउ व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है इकोनॉमिक फोर्स के स्टैंड पॉइंट से, मतलब कि यू विल एम एट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पर्सन शुड गेट हिज ड्यूज, जो भी उसने लेबर किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, यू नो, हिज सोशल स्टेटस, हिज जेंडर, व्हाटएवर। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हो सकता है कि भाई कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन नहीं हो पॉलिटिकल मैटर्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया है कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो भी 18 साल से ऊपर है उसे एक राइट टू वोट है, you know, to choose a representative of his own, you know, in the coming elections. तो justice का real sense में मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं इंडिया के, okay, so it can be secured to the people of India in terms of providing equality, in terms of providing them, you know, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी ग्राउंड पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो उन तरीकों से जस्टिस इन रियल सेंस इन इंडिया कैन बी सिक्योर्ड, you know, by providing them with no kinds of discrimination, okay, with providing them with equal opportunity and with equal status, कि on any grounds you prohibit discriminating them, okay. And अगर कोई भी बेचारा, you know, there is somebody who is backward, who is not able to fulfill their interests or not able to take care of their interests, you promote those people's interest also. So that is where we, you know, mean by or we try to understand in a general concept justice. लिबर्टी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी एक्सेसिव इंटरफेरेंस ना हो, ओके, स्टेट के थ्रू। व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ लिबर्टी in terms of constitution or in terms of preamble rather, we try to understand liberty from the point of view fundamental right when we do article 19 particularly. But जब हम preamble की बात करते हैं तो हम liberty को ऐसे समझ सकते हैं कि it is absence of interference or arbitrary interference. मतलब rightful interference भी हो सकती है, constructive interference भी हो सकती है, but arbitrary interference नहीं होनी चाहिए. Absence of arbitrary interference with individual action by state, okay. तो लिबर्टी का मतलब हुआ कि भाई जो भी राइट्स which are needed for individual कि वो अपने आप को परफेक्ट बना ले अपनी नेशनल लाइफ में, अपनी पोटेंशियलिटीज को इंक्रीज कर ले, वो सब राइट्स उसको प्रोवाइड करानी चाहिए. मतलब he should have, you know, freedom to think, he should have freedom to express himself, read and write, to, you know, have a religion of his choice, to have faith and belief जो भी उसके लिए उसको लगता है
नेसेसरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिबर्टी को किन कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करवाता है या रिकॉग्नाइज करता है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्राइज टू प्रोफेस the securation of liberty of thought, of expression, of belief, of faith and worship. क्यों? क्योंकि these are essential for the development of individual and the nation. Okay? और इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, जो कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की दी हुई है इन द प्रियम्बल, मतलब there shall be no distinctions by the state. ठीक है? Citizens के बीच में on grounds of caste, on grounds of race, sex, place of birth, gender, तो आप सारे public places को open कर दीजिए. You throw open all public places to all citizens. You abolish untouchability, you abolish titles, ठीक है? You provide equality of opportunity in matters of employment, in matters of appointment to any public office or any office under the state. तो इसका मतलब है equality of status and opportunity, और ये preamble में भी दी हुई है, and these things are also mentioned in articles particularly 14 to 18. ये as a fundamental rights भी दिए गए हैं. Okay, last is the idea of fraternity. Fraternity का मतलब होता है, literal meaning होता है spirit of brotherhood. Fraternity का मतलब होता है brotherly feeling कि भाई we are all the children of the same soil. हमारा जो मदरलैंड है वो एक ही है, and we are concerned about staying together, sticking together to each other, ultimately happens whatever, okay, whatever may happen. तो ये टर्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जानबूझ के ऐड किया था ड्राफ्टिंग कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया में आफ्टर so much of bloodshed post partition, it was needed कि Indian people need to have some kind of a goodwill connect or a fraternal or a brotherly feeling with each other. Okay, तो in the drafting committee or the constituent assembly आप कह सकते हो, उन्होंने ये diversity को ध्यान रखते हुए they've taken notice of the diversities of India based on caste, based on color, based on languages, culture. तो इसको रखते हुए they wanted to add this term fraternity कि भाई our constitution also wishes to maintain the spirit of brotherhood or this feeling कि भाई all people are we belong to the same soil and we are not different from each other, and I have good feelings for you, I have brotherly or sibling feelings for you. तो however fraternity का जो concept है वो कहीं भी किसी particular article में कोई specific provision नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो उसको डिफाइन करता है या कुछ कुछ प्रोविजंस है जो उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ठीक है, जो कह सकते हैं कि भाई वी कैन से कि जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को जनरेट करने की कोशिश करता है. हाउएवर देयर इज नो पर्टिकुलर प्रोविजन. तो उसके अंदर हो सकता है किन किन तरीके से आपने यू ट्राई टू प्रमोट ब्रदरली फीलिंग थ्रू कॉमन citizenship, by giving you a chance कि you can move freely and reside in any part of the country, settle in any territory of India. You can practice any profession, you can carry on any occupation, कोई भी trade business आप कर सकते हो. तो ये सब चीजें एक साथ जो है they will try to generate the spirit of brotherhood in our country. And however इसके ऊपर of course there is no specific provision which is mentioned. Lastly, if we will be talking, we are actually concerned with dignity of individual. Just concerned with dignity of individual. So individual dignity is it is to be maintained. अगर आपको brotherhood को maintain करना है, अगर आपको fraternity को promote करना है, तो preamble जो है it assures dignity to every individual. Dignity कैसे assure की जाएगी कि भाई जो भी इंडिविजुअल है will get same
fundamental rights. They will be provided, each and every individual will be given fundamental rights. At the same time, सबको number of directives जो है state के, वो सब लोगों के लिए apply किए जाएंगे, and you will, you know, try to secure all your citizens, whether they are man, whether they are women. You will, you know, try to provide them equally any means of livelihood. Okay, you will aim to give everybody adequate means of livelihood. Conditions of work will be humane and just for everybody, and securing decent standard of life वो सब लोगों के लिए है. डिग्निटी मतलब कोई ऐसा इनह्यूमन काम उससे नहीं कराया जाए, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट हो. ओके, उसको पूरा मींस मिले एडिक्वेटली, ही इज एबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड लिव फॉर हिमसेल्फ. Okay, so that is the concept of dignity or assurance of dignity of individual. Lastly, when we speak of unity and integrity of nation, when we speak of unity and integrity, unity and integrity of nation का मतलब क्या हुआ कि भाई जो इंडिया है, see, India is a union of states. आप इधर से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हो. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो यूनिट्स हैं, मतलब जो स्टेट्स हैं, दे डू नॉट हैव अ राइट टू सेसीड फ्रॉम इट, मतलब उससे सेपरेट नहीं हो सकते. तो मतलब कोई भी ऐसे सेपरेशन की टेंडेंसीज ना आए, ठीक है, इंडिया में. और सारा जो कंट्री है कि एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज देयर होम. That is why, or this feeling will only, you know, try to you know, bring out, or it will help to develop the feeling of unity in diversity. ठीक है, तो कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, which was, you know, referred by the constituent assembly members, कि भाई in case if you wish to have a united country, okay, if you wish to have a united country, you need to have tolerance and respect for all community and sects, and that will only, you know, inculcate the idea, or that will only make India as a unified nation. That will only help them to have you know, the feeling of togetherness, कि भाई आप सब एक जैसे ही हो, your, you know, the entire country is your home, and it is a country of great diversity, and I accept and respect your differences. ठीक है, और फिर भी वो सब करते हुए आई एम टॉलरेंट टुवर्ड्स जो भी आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, आई रिस्पेक्ट ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट विल कीप अस टुगेदर. Okay, so this is also, you know, held by the Supreme Court. So when we have, you know, understood, or when we have discussed all these things, justice किस तरीके का, liberty किस तरह की, assurance of individual dignity, assurance of cohesion, fraternity, unity of the nation, तो ये सब चीजें जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी ना किसी प्रोविजन से कह रहा है. ठीक है, किसी ना किसी प्रोविजन से ये सब चीजों को होल्ड करने के बारे में आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो सेइंग. तो इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग देम इन डिटेल, बट द प्रीएम्बल इज गिविंग, यू नो, इन अ क्रिस्टल फॉर्मेट, इन अ लिमिटेड सेंस. बस एक ओवरव्यू दे देता है प्रीएम्बल इसको. तो वी कैन नाउ से, जो हमने फर्स्ट बोला था कि द प्रीएम्बल एक्चुअली crystallizes the spirit and the ideology of the constitution. Okay, the preamble actually you know, crystallizes the spirit and the ideology of the constitution. So this is from where we started. तो हम इस चीज को actually में we can, you know, we can now wind it up on this thought only कि ये सब चीजें जो भी preamble में provided है are provided in the constitution in detail. So we can very well, very rightly say कि the purpose of the preamble is to, you know, give the spirit or to give the ideology of the constitution, you know, in a gist, or in a small manner, rather in an overview manner. So provides the spirit and ideology of the constitution in a gist, or
ऑल ओवर प्रियम्बल का काम क्या हुआ, प्रियम्बल क्यों इम्पोर्टेंट है, कि वो बहुत सफिशिएंटली क्रिस्टलाइज कर देता है, बहुत सफिशिएंटली प्रोवाइड कर देता है द आइडियोलॉजी एंड द स्पिरिट बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा लास्ट में एक इनैक्टमेंट क्लॉज भी है कि भाई द पीपल ऑफ इंडिया दे हैव अडॉप्टेड इट, दे हैव इनैक्टेड एंड दे हैव गिवन to themselves on 26 नवंबर, बट जो कमेंसमेंट की डेट है वो 26 जनवरी को फिक्स करी गई थी। This thing is provided in Article 394, जो कि स्पेसिफिकली कहता है कि कुछ प्रोविजंस जो है वो आपके 26 नवंबर 1949 को ही ऑपरेट होने लग गए थे, और जो बाकी प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी को कमेंस हुए थे या इन फोर्स आए थे। तो पर्टिकुलरली 394 ये बोलता है कि जो आपके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 एंड 394 ये सब आ गए हैं इन फोर्स, ये सब हो जाते हैं एग्जीक्यूट 26 नवंबर 1949 को ही। बाकी सारी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कब आई इन फोर्स, वो आई 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को बोला जाता है डे ऑफ कमेंसमेंट as per article 394 also, और डे ऑफ 26 नवंबर 1949 को बोला जाता है डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डे ऑफ enactment of the constitution. I think this lecture has been a very long lecture today, I know, but you have this option of taking breaks and then listening to it. मेरे लिए ये एक लंबा lecture था, but for you, you can always take a pause whenever you feel a little dizzy, or maybe you are a little bored of it. I know sometimes constitution may sound very boring, but it is quite interesting if you start to understand it. It is quite fascinating if you know the real concepts and you dig it deeper. So for students, I know you will be watching it after the class has been taken. You will be watching up recorded sessions. So students of LegalStix who have taken up this course, you can always ask me your doubts if you have any of them post seeing the lecture. If you have any, we are always open to suggestions, and clarification of doubts is our prime it is primarily important for us to take care of any kind of problems which our students are facing. And with this, we will now wind up, and thank you for paying attention. And if you're not able to see this video in one go, you can always take up gaps, and then you can come back and continue watching. So thank you, and from the next lecture probably we'll start with the Indian Constitution more objectively, or before we begin with Article 1, we will try to have one particular session to understand the Indian Federation or federalism in India. So to that we will provide up one lecture. So let's see you in other classes now. Thank you, and let's see you again. Thank you, and keep watching LegalStix and our courses which are specifically designed to fit in your personal requirements. And that's all for today. Thank you.